Hi, so this is a case study video in which I'm going to give my views about Tata Motors, which is one of the biggest reputed companies we have in India. It's a Tata Group company, and we are going to analyze it on 6th of June 2021, and we are going to understand of why Tata Motors should be in your radar. And right now Tata Motors is trading around about 335. This is a monthly chart which I have opened in front of me, and we are going to analyze of what could happen and whether this company is poised to have the glories which it had earlier in 2015 2017. So we can see in a मंथली चार्ट दैट टाटा मोटर्स हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि टाटा मोटर्स की अभी जो 335 लेवल्स पे हैं ये फ्यूचर में क्या हो सकती है और किस तरह से जा सकती है. ठीक है, तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख सकते हैं कि 2015-2017 में ये 600 लेवल्स पे थी. फिर वो ह्यूज करेक्शन आई. टाटा मोटर्स जागुआर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेक्जिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इसके हेडविंड्स थे. देयर वर लॉट ऑफ हेडविंड्स फॉर टाटा मोटर्स एंड सो इट करेक्टेड एंड वेंट टुवर्ड्स 80, and now it is around about 350 335 levels, right? So we are going to analyze what could be a potential move we can expect in Tata Motors in the near future, and whether we should be participating in that move. तो एक चीज़ मैं हमेशा जो बोलता रहता हूँ कि the chart and the price pattern and the price movement in the past should always give you a lot of information about the headwinds. We are going to look into this monthly chart. So from a monthly chart we can see that after the dip which came in the month of March 2020 with the corona outbreak, there was a nice dip, and then eventually we can see it has recovered, and this recovery has come with a lot of volume over here. Previous to, if you consider the chart from 2005, so you can see there was a up move where the volumes were okayish at that point of time if you compare the volume of this compared to what it was earlier. So of course this was a huge volume at that point of time, and eventually we can see that it eventually broke the 190 levels at that point of time, and it just made a very good dips like this, and it eventually from 190 200 levels it went to 600 levels over a period of 4-5 years. So this video is more about a long-term investment, so it's not about very short-term moves which I'm interested in. It's more about investment, and this is a video which I'm trying to make, giving you a flavor of the investment, of how people invest and how you can actually create wealth over a long period of time. So before we move forward and what would be the next case study, let's also look into the very good moves which are happening in the very short period of time. So in the start of this year it was around about 180 185 levels, you can see, in 2021, and then it actually doubled the wealth over a period of 3 months. Till March it went to 360 from 180. So this was a very good move. So of course when a stock gives a move like this, the best thing which you could actually ask for is consolidation. And here we can see that the 340 levels since February, this 340 levels was really hard for Tata Motors to cross. If you see this, so multiple times it has tried to come near this 340 levels, and now again it's retesting the 340 levels. So why do we think that this could be a good breakout, and what happens if this breakout comes? So my short-term target for this one, so actually the good thing is when you see a lot of retests which are happening and then it dips, so it came towards it made a high of 360 and then it dipped towards 280 on this on the end of March, and then it again is consolidating between this particular range. So this actually gives a very good idea about that this may be one of the stocks. And on the top of that you can see that there are absolutely no volumes over here. So all the moves, if you look from a very bigger perspective, all the moves you see over here, these are not supported by volumes. So it's more of a range bound, and I think maybe
Today on 6th of June, the time may have come for Tata Motors to break this 340 level and make a very rigorous move. So if we study the past, this pattern is not something which is new. So we also see the same pattern over here, where there was a 52-week high created, and then there was a lot of consolidation, and this was again with smaller volumes, and then boom, this move came, right? So yeah, this is something which I wanted to showcase, that in a daily chart it looks very good, because at the end of the day we have to position ourselves. And what could be the downside? The downside, it could again go and retest. So maybe it fails, maybe it gaps down at tomorrow on 7th of June, and then it goes towards 300 levels and 280 levels, right? So I think from investment perspective, you should be looking for some weaknesses, and you should always be uh, ready with your cash, so that you are able to buy these dips. Because if you are investing, you have to buy in dips. If you're playing the momentum, you have to buy when the move comes, right? And so in this video I will try to talk more about investment perspective, but definitely if a move comes in the second week of June, I think I will definitely participate in it. And if it breaks the 340, 350, 60 levels, I am pretty sure that it will go towards 400 in no time. So this is one of the trades which I am interested in. And one of the things which I actually wanted to showcase in this monthly chart is, you see right now is consolidating. As we saw, there was a big move, and now it's consolidating between this 360 and 300 or 280 zones. And this is actually good, because the more consolidation which happens is actually a good sign that there would be a move, and the move which will come will be much more first of all vigorous. मतलब ये अगर मूव अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी साइन होती है दिखाने के लिए कि जिसको भी जो पोजीशंस बनानी होती है, कोई अगर शॉर्ट करना चाहता है, कोई अगर उस पर लॉन्ग जाना चाहता है, कोई अपना पोजीशन लिक्विडेट करके प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो अगर ये ऐसे मूव्स आती हैं तो ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देन द मूव विच विल कम नेक्स्ट, इसके बाद जो मूव आएगी, अगर ये ऊपर जाए या नीचे जाए, जो भी होगी वो मूव वेल डिफाइंड होगी। उसमें ऐसा होगा कि जो भी मूव आएगा उसका एक रीज़न होगा, ठीक है। और मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि ऑलवेज स्टडी द पास्ट, एंड द पास्ट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो अगर हम लोग चार्ट देखें तो ये 2006 रीजन में वो भी इसी रेंज में थी, ऐसे रेंज बाउंड थी, फिर कोई डिप आया, मे बी इट वॉज बेस्ड ऑन सम 2008, दिस इज़ द रिसेशन विच केम इन। सो यहाँ पे जो भी बंदे कैश में लेके बैठ गए वो तो फंस गए थे, 2-3 साल तक पैसा निकाल भी नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जो भी बंदा इसमें घुसा है, वो जो भी डिप में सिप करके बाई करके बैठा है, दिस इज़ ऑल अबाउट कैश बाइंग ऑफ कोर्स। सो यू सी दैट आफ्टर जैसे ही मार्केट रिकवर किया, अ बिग नेम लाइक टाटा मोटर्स शॉट अप, राइट। तो यहाँ पे ये जो 200 रुपये 150 120 रुपये में था, उसका 5 गुना 600 रुपये का पैसा बन गया। सो दिस इज़ हाउ मनी इज़ मेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड ऑफ कोर्स दिस इन्वेस्टमेंट, दिस टाइम फ्रेम यू कैन सी फ्रॉम 2011 टिल 2015, दैट्स 4-5 साल की एक टाइम फ्रेम में ये पैसा बनता है। और ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये अपर सर्किट लगाएगा, इस तरह से होती नहीं है चीज़ें। और एक चीज़ जो मैं ये और एक दिखाना चाहता हूँ, हमारा ये भी अभी जो सिचुएशन है, इसमें आई थिंक इट्स मोर कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस वन, जहाँ पे एक टाइट नैरो कंसोलिडेशन होता है। दिस इज़ ऑन अ मंथली चार्ट, सो यू कैन सी दिस वाज अ लॉन्ग 8-9 months ऑफ कंसोलिडेशन विच हैपेंड। एंड जैसे मैं बता रहा था कि कंसोलिडेशन जो होती है वो बहुत अच्छी मीनिंगफुल होती हैं। और यू कैन सी दैट अगर कोई भी इरेडिक मूव ऐसे आती है तो ऑब्वियसली ये फिर इस तरह से ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे आप देखो, ये जो मूव आया, यहाँ पे भी 4-5 महीने का कंसोलिडेशन आया, ठीक है ना। तो ये सब मूव्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो गिरता है, इसके बाद जो ये लेवल ब्रेक हुआ, सो नेचुरली अ वेरी गुड, यू नो, दिस इज़ अ मल्टी। यहाँ पे अगर कोई ब्रेक करके 215 में अगर शॉर्ट किया होगा तो वो 135 लेवल तक, तो इट गिव्स अ वेरी गुड मूव टू मेक मनी। और मुझे ये लगता है कि ये शायद अभी 340 के ऊपर जाने, क्योंकि द मार्केट सेंटिमेंट्स आर गुड, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, सो दीज ऑल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल। वन ऑफ द अदर थिंग्स विच आई एक्चुअली वांटेड टू शोकेस, जो मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो एक्चुअली मुझे टाटा मोटर्स पे इंटरेस्ट लाई, इज़ बेसिकली ये वाला कैंडल, ये 2 कैंडल। और ये बनी थी ऑन 18th
सॉरी, ये बनी थी हाँ 18th ऑफ मई, जब टाटा मोटर्स में बोल रहा था कि ये मैं सोचा था कि तभी ये निकलेगा, बट डेफिनेटली यू शुड नेवर बी ट्रेडिंग बिफोर रिजल्ट्स, एंड दैट वाज जस्ट बिफोर रिजल्ट्स. आफ्टर रिजल्ट्स केम, ये यहाँ पे गया, इट ओपन एट अराउंड अबाउट 310, और तब से ये वही 310 और इसमें ही कंसोलिडेट कर करके धीरे धीरे मूव कर रहा है, और यहाँ पे आप देखो कोई वॉल्यूम भी नहीं है. सो ये जो होती है ये बहुत अच्छी एक साइन होती है कि रिजल्ट ख़राब थी, उसका कुछ वन टाइम लॉस हुआ था, और सबको यही लगा था कि ये गिरेगा. और ये जो कैंडल थी, दिस वाज समथिंग विच इज़ रियली गुड कैंडल इन द सेंस ये गया और नीचे रिटेस्ट होके अभी ऊपर आया. एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न. एक्चुअली मैं ये ट्वीट भी किया था कि मैं 320 में घुसा भी था, और वो अभी 336 तक गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. सो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 5% मुझे रिटर्न बहुत ही 2-3 दिन में मिल गया, और इसका रीज़न यही था कि ये रेड कैंडल आया लेकिन इसमें कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं हुआ. एंड दिस इज अ पर्टिकुलर पैटर्न व्हेन देयर इज नो फॉलो अप सेलिंग कम्स after a big fat red candle. This actually means that there are buyers. अभी ये जो buyers हैं, this you can also validate in a number of ways, right? So I think going forward ये 340 level may get broken or it may get tested, और फिर वो फिर गिर सकती है. ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रेकआउट एक बार में ही आएगा. there could be a market sentiment, there could be a lot of headwinds, लेकिन मुझे इस तरह से अभी जो लग रहा है, एज आई सेड, कि इफ़ यू डू द नंबर ऑफ मैथ्स इज ओवर हियर 1 2 3 4, सो इतने बार ये लेवल्स को जब टेस्ट कर रही है और टेस्ट करके ये 316 या 300 लेवल्स को होल्ड कर रही है, दिस एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड आइडिया दैट मे बी दिस विल गो फॉर अ इमीडिएट अप मूव. सो फोक्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टाटा मोटर्स, और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं वही बोलूँगा कि टाटा मोटर्स मेरी रेडार में ऑलरेडी है, और ये रीजन में ट्रेड नहीं किया क्योंकि इसमें रिज़ल्ट बेस्ड मूव्स होती हैं, और इस रीजन में मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ. मैं रिज़ल्ट के 2-3 दिन बाद देखता हूँ कि ये स्टॉक में कोई वीकनेस आया कि नहीं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियसली जो लो बनाए थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अभी ये लोज जो हैं वो हायर लोज हो रही हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली गिविंग अ वेरी गुड फॉर्मेशन ऑफ अ पैटर्न ऑल्सो, कि ये ऐसे ऐसे करके एक पैटर्न बना रही है. मे बी इट विल अगेन करेक्ट टूवर्ड्स 300 लेवल्स, वी नेवर नो, बट इन लॉन्ग टर्म एज वी सॉ इन दिस मंथली चार्ट, दैट आई थिंक दिस इज समथिंग विच शुड बी टेकन अप एज एन इन्वेस्टमेंट. और अगर 280-290 के इस तरह का डिप आए, you should always buy few and keep it in and hold it in cash. Or regarding this future movement, well, these are all speculations, so आप अपने financial advisor, always consult your financial advisor before making an investment. But from my perspective, I am also a long-term investor, and I always invest in very big brands and big good companies. मैं कोई small cap micro cap में invest नहीं करता हूँ. मैं जो भी करता हूँ एक बड़ी कंपनी, big brand में करता हूँ. So टाटा से बड़ी ब्रांड इंडिया में और क्या हो सकती है, और मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी वेयर आई थिंक आई कैन इन्वेस्ट एंड आई कैन मेक सम मनी. ये आपको एक चीज़ देखनी होगी कि 2016-17 से ये एकदम कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में थी, और ये डाउन ट्रेंड अभी लग रहा है कि ऑफ कोर्स वी कैन सी, वी डोंट नीड एन इंडिकेटर, हमें इंडिकेटर नहीं चाहिए देखने के लिए कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है. सो दैट्स ऑल फोक्स, होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. और अगर आपको टाटा मोटर्स में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और आप अपनी राय बताइए, व्हाट लेवल्स यू एक्सपेक्ट टू सी इन योर इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर इन्वेस्टेड फ्रॉम दीज लेवल्स, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हियर कि आपको इन्वेस्टमेंट वाइज आपकी टारगेट्स क्या हो सकती है, और टाइम फ्रेम ऑल्सो क्या हो सकती है. लेकिन मेरे लिए ये इट्स poised to go above 400 levels. So of course 400 is a big psychological level, and so theoretically you cannot expect much out of 400.
आफ्टर 400, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन 400 के बाद आएगी. लेकिन अभी ये 330, दिस इज द राइट नाउ एट 330 levels. I think you are going to get a very good 70 rupees move, which corresponds to 20%. So maybe this is something which could be taken up by some medium term, as a medium term goal. और 400 के बाद वो शायद फिर 330 levels को टेस्ट करने आए, और after that we will see how it moves. So thanks a lot for listening and have a nice day. Bye bye.